Greetings everyone, welcome to your own channel Amit Mishra Genius Labs. We are solving thermodynamics PYQs, so let's continue with the same. You can see my screen a question. Identify the intensive quantities from the following. Options are given. Enthalpy, temperature, volume and refractive index. These are four options given. So what is the basic fundamental of intensive quantities? Intensive is mass independent quantities. What are mass independent quantities? For example, temperature. Agar aap, let's say you have a rod, you cut it in two pieces. Temperature will remain same for both the pieces and the complete rod itself. Think about molarity. Think about density. So these structures or these quantities will not change at all. So what should be the answer for this question? Temperature can be one option. Another option which is not dependent on the amount of substance is known as refractive index. You take a glass piece. You take a smaller part, bigger part, complete glass, it will have same refractive index value. Hence, options to be marked are B and D. A and C are properties which are based on mass, hence they are extensive properties. So that's a key difference here. Can you mark the answer? Now see the next question. The following is our endothermic reaction. Endothermic reaction कौन सी reaction होती है जहाँ पे delta H positive हो, जहाँ पे आप heat supply कर रहे हो, एक एक करके सारे रिएक्शंस देखते हैं. कंबशन ऑफ मीथेन बर्न करो मीथेन को, हीट निकल के आएगी. डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर एंडोथर्मिक हो सकता है. डिहाइड्रोजनेशन, देखो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन जनरली एक्सोथर्मिक होती है. डिहाइड्रोजनेशन क्या हो सकती है? एंड हो सकती है, राइट. द नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ ग्रेफाइट टू डायमंड. इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर. सो व्हिच ऑल पार्ट्स वी गोइंग टू मार्क फॉर दिस क्वेश्चन? विल मार्क ऑप्शन बी, सी एंड डी. सिंपल क्वेश्चन इट इज. थर्मो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी. आपने देखा रिसेंटली एग्जाम्स में भी कई सारे क्वेश्चन थर्मो के थे. तो कॉन्सेप्ट्स वहाँ पे क्लीन और क्लियर रखो अपने, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो. तो इंटेंसिव, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं. अमंग द फॉलोइंग स्टेट फंक्शन इज आर. क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे. स्टेट फंक्शन क्या होता है? स्टेट फंक्शन जो स्टेट पे डिपेंड करे, पाथ पे डिपेंड ना करे. यानी अगर आप पॉइंट 1 से शुरू हो रहे हो और पॉइंट 2 पे जा रहे हो, यू कैन टेक एनी पाथ यू विश, but the values will remain same. Delta U2 minus delta U1 is same. Similarly, delta S2 minus delta S1 is same. So वो नंबर जिनके लिए वैल्यू सेम होगी वो सारे यहाँ पे लिख सकते हैं. So कौन से ऑप्शन मार्क कर सकते हैं हम लोग? चेक ऑप्शन नंबर ए, इंटरनल एनर्जी. कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिकॉज इंटरनल एनर्जी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द पाथ. इरिवर्सिबल एक्सपेंशन वर्क और रिवर्सिबल एक्सपेंशन वर्क. रिमेंबर, वर्क जब भी आएगा यहाँ पे पिक्चर में, तो उस केस में आपका पाथ डिपेंडेंट हो जाएंगी वैल्यूज, राइट. इट इज नॉट अ स्टेट फंक्शन. नाउ फोर्थ ऑप्शन इज मोलर एंथैल्पी. मोलर एंथैल्पी इज डेल्टा एच. वी हैव डन किरचॉफ्स लॉ. सो यू स्टार्ट फ्रॉम वन पोजीशन, गो टू अदर पोजीशन, और हेस लॉ वी हैव, राइट. सो बेस्ड ऑन दैट वी कैन से enthalpy can be considered as again one option, right? So which options we want to mark for this question, particular question? Option number A, option number D. Next, question number 4 on your screen. Among the following, the intensive properties are. फिर से देखो intensive properties पर question आ चुका है. Molar conductivity of a given solution उसके mass पे dependent नहीं, because ये molar है, right? Per mole पे define किया आपने. So एक option हो सकता है. EMF value. Look at the EMF value. If you say copper to copper plus 2, do you think of how much copper I will take? No. You just say copper plus 2, right? So option B can be considered, right? Resistance can be dependent on the substance, right? You have a small wire, resistance is less. You have a longer wire, same material, it will be more. Heat capacity also the same way, right? So the correct answer for this question would be A and B options. क्वेश्चन 5 पे आ जाइए. काफी ट्रिकी, काफी अच्छा क्वेश्चन. एक ग्राफ गिवन है यहाँ पे, ध्यान से ऑब्जर्व करो. P वर्सेस V का ग्राफ गिवन है, एंड यू आर गिवन X, Y and Z. So look at this question number 5. For an ideal gas, consider only PV work in going from initial state X to the final state Z. The final state Z can be reached by either of the two paths shown below. एक X, Y, Z ऑप्शन है, एक X to Z ऑप्शन है. पहली बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली कि इस पूरे प्रोसेस में अगर मैं X से Z पे जा रहा हूँ किसी भी पाथ से, had it been a state function तो पाथ पे डिपेंड होगा नहीं, तो आपका आंसर सीधे सीधे निकल सकते हैं. यानी कि डेल्टा एस एक्स टू जेड विल बी डेल्टा एस एक्स टू वाई प्लस डेल्टा एस वाई टू जेड. व्हाट इज वर्क डन? वर्क डन एक्स वाई जेड इज सेम एज वर्क डन एक्स वाई, बिकॉज वाई जेड वर्क डन इज 0, बट यू कांट से इट इज सेम एज एक्स वाई xz is same as xy and yz, right? That's the difference.
So which are options that you can pick from the given question? Check option number A, delta S xz. Yes, that's a correct option. And check option number C also. Option number C is also seems to be correct. I hope we can solve such questions without much difficulty. Thank you so much for watching this video. Keep liking, subscribing and sharing with your friends.